Hello my dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of class 5. This is a book and the name of the book is Joyfull Mathematics. Today we are going to do a new chapter. This is chapter number 8 of the book and the name of the chapter is Multiples and Factors. Here an example is given, an exercise is given. You have to do this first. Look at the multiples of 2 and 3 on the number line. यहाँ पे 2 के multiples ऊपर हैं और 3 के multiples नीचे दिए गए हैं. And you have to fill in the blanks. Blanks are given in front of you. You have to fill this. So let's see the multiples of 2 are. First is 2. Next 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18 and 20. Similarly, here let's see the multiples of 3 are 3, then 6, 9, 12, 15, 18 and 21. Now, common multiples of 2 and 3. वो multiples हमें find out करने हैं जो 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है. So यहाँ पे देखेंगे this 6 is common in both the tables. So here we are going to write 6. अब देखेंगे 12 is in both the tables. Next is 18. So the common multiples of 2 and 3 are 6, 12 and 18. Now, question number 2. Write all the factors of these numbers. जो भी numbers दिए गए इनके factors लिखने हैं. Write the common factor in the part shaded green. इस part में हमें इनके common factors लिखने हैं. So, let's write down the factors of 15. So, कैसे लिखते हैं factors? 15. Multiply 1 is equal to 15. Next is 3 multiply 5 is equal to 15. Now let's see the factors of. So here the factors are 15, 1, 3 and 5. So these are the factors of 15. 15, 1, 3, 5. Now, factors of 36 we have to write. So, let's write down the factors of 36. 1 multiply 36 is equal to 36. 2 multiply 18 is equal to 36. Now, 3 multiply 12 is equal to 36. 4 multiply 9 is equal to 36. Now 6 multiply 6 is equal to 36. So these are the factors. So क्या क्या factors हैं 36 के 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. तो ये सारे जो नंबर्स है ये फैक्टर्स है 36 के. अब आपको क्या लिखना है दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखना है. सो द कॉमन वन इज 1, दोनों में 1 है. इसके बाद है 3 and only 1 and 3. So here the factors of 15 and 36 are 1 and 3. Here in the previous class, we have learned about the multiples and the factors. Let's revise some things. What are multiples? The multiples of a number are formed by, ये जो multiples हैं, these are formed by multiplying it with other number. इन्हें बनाया जाता है दूसरे number से multiply करके. Like 1, 2, 3, 4, and so on. So, a number can have unlimited multiples. नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 multiply 1 is equal to 4.
4 multiply 3 is equal to 12. 4 multiply 5 is equal to 20. 4 multiply 2 is equal to 8. 4 multiply 4 is equal to 16. 4 multiply so on. So here 4, 8, 12, 16, 20. These all are the multiples of 4. ये 4 की table में आते हैं. That's why they are the multiples of 4. Now let's learn about some common multiples. Numbers that are common in multiples of 2 or more numbers. वो numbers जो common है multiples में, 2 या उससे ज़्यादा numbers के are said to be common multiples. उन्हें common multiples कहा जाता है. Find the common multiples of 3 and 6. 3 and 6 के जो common multiples हैं that we have to find. First, let's write down the multiples of 3. So, all these come in the table of 3. 3, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Similarly, let's write the table of 6. So, 6, 12, 18, 24, 20, 30, 36 and so on. Now, let's find out the common multiples of 3 and 6. तो 3 और 6 में जो common multiples हैं उन्हें हम ढूंढेंगे. So 6 आप देख सकते हो दोनों की टेबल में है, 12 भी है दोनों की टेबल में, 18 भी है दोनों की टेबल में और 24 भी है दोनों के टेबल में. So the common multiples of 3 and 6 are 6, 12, 18 and 24. Every number is a multiple of 1. जितने भी numbers हैं वो 1 के multiple होते हैं. Every number is multiplied by itself. हर number को 1 से multiply किया जाता है. Multiples of a number are greater than or equal to the given number. जो भी multiples होते हैं किसी भी number के वो या तो बड़े होते हैं या equal होते हैं उस number के. Now let's learn what are the factors. A number is said to be a factor of another number. एक number को किसी और दूसरे number का factor कहा जाता है if it can divide the number completely. अगर वो उस number को पूरी तरह से divide कर सकते हैं. In other words, when two numbers are multiplied with each other, जब दो numbers को एक साथ multiply किया जाता है with each other, each of the number is a factor of the product. हर एक number जो है factor है उसके product का. For example, list all the factors of 16. 16 के सारे factors बताने हैं. So 16 जो है जिन numbers की table में आता है वो बताना है. तो 16 1 times, 2 8s are and 4 4s are. So in sub tables में 16 आता है. So here the factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. These are the factors of 16. Now let's learn what are the common factors. Common numbers among the factors of 2 or more numbers are called common factors. वो common numbers जो factors हैं दो से ज़्यादा numbers के उन्हें हम common factors कहते हैं. For example, find the common factor of 12 and 18. 12 और 18 के common factors बता दें. So here the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Similarly, the common factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18. अब इन दोनों में आप देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है. 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 है and 6. So that's the common factors of 12 and 18 are 1, 2, 3 and 6. 1 is a factor of every number. Every number is a factor of itself and factor of a number are less than or equal to the given number. Now let's do this exercise 8.1. So here children, the first question is fill in the blanks with the next 5 multiples of the given numbers. ये जो numbers दिए गए हैं इनके क्या करने हमें next 5 multiples निकालने means table. So let's write down, do this first one. The next multiples of these numbers are 6, 9, 12, 15 and 18. Now let's do this 11. Question number C. The next 5 multiples are 22, 33, 44, 55 and 66. So these numbers that I have written, these are the multiples of the given number. Similarly, let's do this question number 2. Find 2 common multiples of the following.
2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 और 8 देखेंगे कि इनकी tables लिखेंगे. Similarly, let's write the table of this 12. So here children, the question is we have to find 2 common multiples. So let's see, the 2 common multiples of 8 and 12 are 24 and the next is 48. So these two are the common multiples, 24 and 48. Similarly, we have to find the common multiples of the rest. Next question, let's do this C part. So children, here the question is we have to find the 2 common multiples of this given number. So हम देखेंगे multiples में 25 and but here 25 is not written, so it's not the common multiple. 50 and 50. So children, the common multiples of the sixth C question is 50 and 100. Now let's do this question number 3. Write all the factors of the given numbers. ये number दिए गए इनके सारे factors लिखने हैं. So let's do this first one, 24. Let's write down the factors of this. So children, the factors of 24 are, these numbers are the factors. So the numbers are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. So these are the factors of 24. Similarly, you have to find the factors of, let's do this D part. Let's find the factor of 25. So here children, now further we cannot get the table of 25. So the factors of 25 are 1, 5 and 25. So these are the factors of 25. Similarly, you have to find out the factors of the rest two numbers. Let's do question number 4. Find the common factors of the following pairs of numbers. So यहाँ पे कुछ numbers दिए गए हैं, इनके पहले हमें common factors find out करने हैं. So let's do this A part first. तो पहले 14 के factors निकालते हैं. So the factors of 14 are 1, 2, 7 and 14. Similarly, 30 के निकालते हैं. So the factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. So now let's find the common factors. Common factors को हमें find out करना है. So the common factors are 1 and 2. Now nothing else is left. So the common factors of 14 and 30 are 1 and 2. Similarly, we have to find the factors of another number. Let's do this C part. Let's find the factor of 44. So the factors are 1, 2, 4, 11, 22 and 44. Similarly, let's find the factor of 66. Let's divide 66 by 4. So 4 is not the factor of 66. So the factors of 66 are 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 and 66. Now we have to find the common factors of these two. So 1 and 2 will come. Next 11 will come and 22 will come. So here the common factors of these two numbers are 1, 2, 11 and 22. I hope this is clear to you. Now let's learn the even and odd numbers. Even numbers, numbers which are the multiples of 2 are called even numbers. वो numbers जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, उन्हें हम जो 2 के मल्टीपल्स हैं उन्हें even numbers कहते हैं. In other words, we can say that numbers which can be easily divisible by 2. वो numbers जो 2 से easily divide हो जाए without leaving any remainder,
those numbers are called even numbers. For example, 2, 4, 6, 8, etc. These are the even numbers. Now let's learn what are the odd numbers. Numbers which are not multiples of 2. वो numbers जो 2 से divide नहीं हो सकते completely, those are called odd numbers. In other words, odd numbers cannot be exactly divisible by 2. For example, 1, 3, 5, 7, 11 and so on. Now, what are prime and composite numbers? Prime numbers are numbers that have only two factors, or 1 and the number itself, and the number is said to be the prime number. So, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो पहला होता है 1 और दूसरा वो खुद वही नंबर होता है. नेक्स्ट लेट्स सी द एग्जांपल्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc. These are the prime numbers. Now let's move on to composite numbers. Composite numbers are numbers which have more than two factors. वो numbers जिनके दो से ज़्यादा factors होते हैं उन्हें हम composite numbers कहते हैं. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15. These are composite numbers. इन्हें हम composite numbers कहते हैं, जो दूसरी भी tables में आते हैं. Now the next is co-prime numbers. Two numbers are said to be co-prime if they have only one as their common factor. दो numbers को हम co-prime तब कहते हैं जब उनका जो factor है 1, common factor 1. For example, consider 18 and 25. यहाँ पे दो numbers दिए गए हैं 18 और 25. तो इसमें आपको देखना है इसके जो factors हैं क्या हैं 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Similarly, 25 के factors है 1, 5, 25. अब आप इसमें देखोगे कोई भी common factor नहीं है 1 के अलावा. So ऐसे number जिसमें factor सिर्फ 1 हो common उसे हम co-prime number कहते हैं. We can see 18 and 25 have only one common factor. That's why these are co-prime numbers. One is neither prime nor composite. One जो है ना तो prime है और ना ही composite number है. One is a factor of every number. One हर एक number का factor. 2 is the only even prime number and all other prime numbers are odd. 2 जो है सिर्फ एक ऐसा अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड हैं. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर 8.2. राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100. So let's write it. So children, all the prime numbers between 50 to 100 are 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. Now let's move on to this question. Question number 2. Write yes or no. Co-prime numbers need to be prime numbers themselves. क्या ये जो co-prime number हैं क्या इन्हें prime numbers होना जरूरी है? Yes. Prime numbers have either one और टू फैक्टर्स होंगे. जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके जो है 1 या फिर 2 फैक्टर्स होते हैं. नो. 2 is the only even prime number. Yes. So similarly, children, find out the answer of the rest questions and write it here. Now let's do this question number 3. Can 12 and 35 be called co-prime numbers? Why? क्या 12 और 35 को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? And for this, let's find out 12. Similarly, let's find the factors of 35. So here you can see children, इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें 1 is the only one common factor. So yes, it is a co-prime number. Now question number 4 is how many even and odd numbers are there between 1 and 100? So कितने even numbers हैं 1 से 100 के बीच में और कितने odd numbers हैं between 1 to 100? So यहाँ पे जब हम 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं
So there are total 50 even and 50 odd numbers. Now find the sum of all the even and the odd numbers between 1 to 100. What do you observe? आपको क्या करना है, आपको इन सारे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को ऐड करना है और आपको देखना है कि आपको क्या समझ में आता है. So children, when we add all these even numbers, for example 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 and so on till 100, हम जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें हमने जब ऐड किया तो आंसर इज 2500. सिमिलरली जब हम ऐड करेंगे सारे ऑड नंबर्स को 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 and so on till 99 तक अगर हमने सारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन्हें ऐड किया तो आंसर आएगा 2500, which means कि जितने भी इवन नंबर्स हैं 1 to 100 है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 to 100, अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो दोनों का जो टोटल है दिस विल बी द सेम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम. को-प्राइम कौन कौन से पेयर्स हैं, लेट्स सी. सो 12 और 27 दोनों जो है जब हम इनका फैक्टर्स देखेंगे तो ये खुद का फैक्टर 1 तो है बट इसके अलावा 3 भी इनका फैक्टर है. सो 3 की टेबल में भी आ रहे हैं तो इसका मतलब दीज आर नॉट को-प्राइम नंबर्स. सिमिलरली अब हम 12 और 25 को देखेंगे तो 25 और 12 जो है को-प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स इनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा. 18 और 24 दोनों 2 की टेबल में भी आ रहे हैं, 1 की टेबल में भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये को-प्राइम नंबर्स नहीं है. Similarly 14 and 18 these are also not co-prime numbers. Similarly you have to find the rest of the numbers whether they are co-prime or not. Now let's learn the rule of divisibility. There are some common rules to find out the number is divisible by another number or if it has a factor. So कुछ rules हैं जिससे पता चलता है कि कोई नंबर किसी से divisible है या नहीं या कौन सा किसका factor है. So let's see the number 2 and its divisibility test is if the number ends in 0, 2, 4, 6, 8. अगर कोई भी नंबर जिसकी लास्ट में 0 आता है, 2, 4, 6 या 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 है लास्ट में 2 से डिवाइड किया तो आंसर इज दिस, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया. 8 लास्ट में है, 2 से डिवाइड हो गया. Now 3 का divisibility test क्या है, if the sum of all the digits is divisible by 3. जितने भी numbers हैं उसके जितने भी digits हैं उन्हें हम प्लस करेंगे. प्लस करने के बाद वो 3 की टेबल में वो नंबर आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2133 एक नंबर दिया गया है. अब आपको बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है तो हमने 2 + 1 + 3 + 3 कर दिया तो आंसर आया 9. क्या 9 आता है 3 की टेबल में? यस. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. Next is 4. If the number formed by the last 2 digits is divisible by 4. लास्ट के 2 नंबर्स अगर 4 की टेबल में आते हैं 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर 28 में लास्ट 2 नंबर क्या है 28. तो क्या 28 आता है 4 की टेबल में? यस. सो इट इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज 5. इफ द नंबर एंड्स इन 0 और 5. अगर जो भी नंबर है हमारे सामने उसके लास्ट में 0 आ रहा है और 5 आया है, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो सकता है. सो ये नंबर है, इसका लास्ट डिजिट 5 पूरी तरह से डिवाइड हो गया. 0 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3. कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स दोनों से डिवाइड होना जरूरी है. अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 2712. अब इसकी डिविजिबिलिटी हम देखते हैं. जब हम 2712 को देखते हैं तो लास्ट डिजिट है 2 जो कि 2 की टेबल में आता है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है. अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, सारे नंबर्स को प्लस करेंगे. सो 2 + 7 + 1 + 2. सो जब हमने इसे प्लस किया तो हमें जो आंसर मिला वो 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है.
तो आप ये नंबर जब दोनों 2 और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 16 डिवाइड कर सकते हैं. Divisibility of 8. If the number formed by the last 3 digits. 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स मींस 1 10 और 100 तीनों प्लेसेस को देखना होगा. अगर वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो पूरा नंबर 8 की डिविजिबिलिटी में पास हो जा रहा है. सो हियर वन नंबर इज गिवन. अब इसके लास्ट के डिजिट्स देखेंगे. 2 3 2. लास्ट डिजिट्स है 2 3 2 और जब हमने इसे डिवाइड किया which is divisible by 8. So this number is divisible by 8. Next, 9th. 9 की टेबल में देखना है if the number is sum of the digits is divisible by 9. तो 9 के में भी क्या करना है, जो ये नंबर्स हैं इनके सारे डिजिट्स को प्लस करना है और वो 9 की टेबल में आना चाहिए. सो जब हमने इन्हें ऐड किया तो ये 27 9 की टेबल में आता है. इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है. सिमिलरली डिविजिबिलिटी ऑफ 10. इट्स वेरी सिंपल. कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है, वह कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 8.3. स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बताना है. If the number is divisible by 2, it must be divisible by 4. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है? No. This is false. Next, if a number is divisible by 4, it must be divisible by 2. अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 2 से भी हो सकता है? Yes, true. Similarly, find the answer of the rest. Now let's move on to question number 2. Which of the following numbers are divisible by 2? तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको बतानी है. 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? नंबर शुड बी इवन. लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए. अगर किसी भी नंबर के पीछे ये है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है. तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 2, तो डिविजिबल है. 8 डिविजिबल है. 5 डिविजिबल. 6 डिविजिबल है. Similarly, I have to do the rest. Now, let's move on to question number 3. Test the divisibility of these numbers by 3 and 9 without performing actual division. बिना डिवाइड किए हमें जो है बताना है कि ये जो नंबर्स है क्या वो 3 और 9 से डिवाइड हो सकते हैं. सो 126 प्लस करते हैं इन सारे नंबर्स को. तो 6 plus 2 is 8 and 8 plus 1 is 9. तो 3 की टेबल में क्या 9 आता है? Yes, तो ये डिविजिबल है. 9 की टेबल में क्या 9 आता है? Yes, तो ये 9 से भी डिविजिबल है. सिमिलरली लेट्स डू दिस जी पार्ट. इसके सारे नंबर्स को ऐड करते हैं. सो 8 plus 2 is 10 and 10 plus 3 is 13. 13 plus 1 is 14. क्या 14 आता है 3 की टेबल में? नो. 9 की टेबल में? नो. तो इसका मतलब ये दोनों से डिविजिबल नहीं है. Let's do this D part. 8 plus 5 13 and plus 3 is 16. So 16 क्या 16 आता है 3 की टेबल में? No. और 9 की टेबल में? No. So this is also not divisible by 3. So similarly 3 and 9. So similarly you have to find the rest whether they are divisible by 3 or 9. Now let's do this question number 4. Question number 4 में देखेंगे which of the following numbers are divisible by 4 and 8. कौन से नंबर हैं जो 4 से और 8 से divisible हैं. So 4 की divisibility के लिए हम लास्ट के 2 digits देखते हैं और 8 की divisibility के लिए लास्ट के 3 digits देखते हैं. तो लास्ट के 2 digits देखते हैं हम 4 के लिए. तो क्या 14 आता है 4 की टेबल में? नो. और 8 की टेबल में क्या 114. क्या 8 जो है 114 को डिवाइड कर सकता है? लेट्स सी. नो. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4 and 8. सिमिलरली लेट्स डू दिस एफ पार्ट. एफ पार्ट को करते हैं. एफ पार्ट में देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या ये 4 की टेबल में आते हैं? यस. तो यस ये 4 से डिविजिबल है. अब लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है कि
क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? यस, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8 दोनों से ही डिवाइड हो सकता है. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर डी. डी क्यों करते हैं? क्या 4 की टेबल में 18 आता है? नो, तो 4 से डिविजिबल नहीं है ये. अब 8 की टेबल में देखते हैं. 7 1 8 को 8 से डिवाइड करते हैं. सो ये चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू गेट द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर मिला, it's 6. So this is also not divisible by 8. So this number is neither divisible by 4 nor by 8. So I hope this is clear to you. Similarly, you have to do the rest questions on your own. Now let's move on to question number 5 is the divisibility of the following numbers by 5. तो 5 की divisibility के लिए as we know कि number के last में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए. अगर ये दोनों आते हैं इसका मतलब वो number 5 से divisible है. तो यहाँ 0 है, it's divisible. 0 divisible, 5 divisible and 1 not divisible. Similarly do the rest. Now let's move and test the divisibility of 6. So 6 से divisible के लिए क्या चाहिए हमें कि कोई भी number 2 और 3 दोनों से divisible होना चाहिए, तो ही वो number 6 से divisible है. तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या 2 की टेबल में ये आता है, 0 आता है, yes, तो ये 2 से divisible है. अब 3 से चेक करते हैं. 3 से चेक करने के लिए हमें सारे नंबर्स को ऐड करना होगा. So 7 plus 5 we have to do. So it's 12. तो क्या 12 आता है 3 की टेबल में? Yes. So this number is divisible by 6 also. Similarly, let's do this G part. Last number is 6 जो कि 2 की टेबल में आता है. So yes, it's divisible by 2. अब जो है सारे नंबर्स को ऐड करते हैं. 3 plus 6 plus 3 plus 6 plus 3 plus 6. So 18 plus 9. It's 27. तो क्या 27 आता है 3 की टेबल में? Yes. So this number is also divisible by 6. Similarly, you have to find the rest of the numbers. You have to check and find out whether they are divisible by 6 or not. Now let's learn prime factorization. Prime factorization क्या होता है? We can find the prime factorization of the numbers by two methods. Two methods से जिससे हम इसे find out कर सकते हैं. First is long division method and the second is factor tree method. ये दो मेथड है जिससे हम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट है लॉन्ग डिविजन मेथड. प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन बी फाउंड बाय रिपीटेड डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स. रिपीटेड डिवीजन अगर हम करेंगे प्राइम नंबर्स का तो उसमें प्राइम फैक्टर को इजीली ढूंढ सकते हैं. Here the first example is find the prime factor of 84. 84 का prime factor निकालना है. So this is the long division method. अब 84 को हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है. सो 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 42. 42 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 21. अब 21 2 से फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो अगला नंबर जो प्राइम नंबर है वो है 3. 3 से डिवाइड करते हैं. सो 3 से डिवाइड किया आंसर है 7. सो दिस इज द 7 is a prime number. So prime numbers are 2, 2, 3 and 7. Now let's learn the factor tree method. Prime numbers, prime factors of a numbers can also be found by factorizing in a pictorial form. Pictorial form में हम इसे करके जो है prime factor निकाल सकते हैं. Called a factor tree, जिसे हम factor tree कहते हैं. This is a factor tree. Find the prime factors of 48. 48 के prime factors हमें निकालने हैं. So पहला स्टेप है क्या करना है 48 लिखना है. क्योंकि टेबल देखनी है क्योंकि is a prime number. So जब 2 से हमने 48 को डिवाइड किया we get 24. अब हमें जो है 24 को डिवाइड करना है 2 से तो we will get 12. Similarly अब 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो we will get 6. अब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं we will get 3. So here these जो भी ये white box में लिखे हैं ये सारे हमारे prime factors हैं. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. So these are the prime factors of 48. Now let's do this exercise 8.4. So here let's find the we have to construct the factor tree. Factor tree बनाना है हमें. So 225 का factor tree बनाएंगे.
So 5 है. So let's divide it by 5 first. What answer we are going to get? 45. Next 45 को 5 से divide करते हैं. We are going to get 9. अब 9 को 3 से divide करते हैं. We are going to get 3. So this is the factor tree, children. The factors are 5, multiply 5, multiply 3, multiply 3. I hope this is clear to you. Similarly, let's find the factor of this B part. 144 factor tree बनाते हैं. So 2 से सबसे पहले divide करते हैं. So children, the factors of 144 are 2 multiply 4 times. Let's multiply 2 4 times. And 3 2 times. So children, I hope this is clear to you. Similarly, I have to find the factor through you have to construct the factor tree for the following numbers and find out the factors. Now let's move on to question number 2. Find the prime factors of the following numbers and express them in the index form. Index form में हमें लिखना है. So here the prime factors of the following numbers are 125. Let's find the prime factors of 125. So children, here the prime factors are 5 multiply 5 multiply 5. So these are the factors of 125. Similarly, let's find the factors of this 110. We have to divide 110 by 2. So we get, so the factors are 2 multiply 5 multiply 11. So these are the factors of 110. So children, similarly, you have to complete the rest of the questions that are given here. You have to find the factors of them and write it here. Now, highest common factor, which is HCF. HCF is also known as highest common factor. Means सबसे बड़ा factor कौन सा है किसी number. The largest common factor of two or more numbers is called highest common factor. जो सबसे बड़ा factor होता है उसे हम highest common factor कहते हैं. And it is also known as greatest common divisor. इसे greatest common divisor भी कहते हैं. We can find HCF by two methods. दो methods हैं. पहला है prime factorization method and दूसरा है division method. Here let's learn the HCF, how to find HCF by prime factorization method. So here three numbers are given. हम इनका HCF निकाल रहे हैं. So 456 को 2 से divide किया, we get 228. Again we divided by 2, we get 114. Again divided by 2, we get 57. और 57 further 2 से divide नहीं हो सकता. So अब हमने इन दोनों digits को plus किया. Yes, ये 3 से divide हो सकता है. तो हमने 3 से divide किया तो we get 19. 19 एक prime number है. So हम इसे आगे divide नहीं कर सकते. So we have written 19. Similarly 360 and 1200 के factors हमने निकाले हैं. Divide करके इन्हें जो भी prime numbers है smallest से start किया पहले and then we have increased the numbers. So अब इन तीनों के factors निकालने के बाद हम इनका जो है common निकाल रहे हैं. So common निकालने के लिए हमने देखा कि कितने टाइम 2 है 1 2 3 3 times 2 है दोनों में and 1 time 3 है दोनों में 1 है सब में. बाकी जो numbers हैं वो common नहीं है. So here the HCF of these three numbers are the product of the common factor. जो भी common factor उनके product को निकालेंगे तो HCF निकल जाएगा. So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 1. So जब हमने इन्हें multiply किया we get 24. So 24 is the HCF of these three numbers. This method is used to find the HCF of the larger numbers. Now HCF by long division method. Long division method से कैसे हम इस HCF निकाल सकते हैं? Find the HCF of these numbers by using the division method. So here let's learn how can we do this. So here first let's find out the HCF of 175. So 175 and 200. So 200 यहाँ पे लिख दिया हमने 175 से divide कर रहे हैं.
1 times it's 175. Remainder is 25. अब ये जो 175 है ये वाला इसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. So 25 से जब हमने डिवाइड किया it's totally divided. अब जो है यहाँ पे ये 25 रिमेनिंग है. अब इस 25 से हम इस अगले नंबर को डिवाइड करेंगे. 9 times में it's divided. So here since 25 and 225 is 25, therefore HCF of these numbers is 25. इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स है सबका HCF क्या है ये 25. Now let's do this exercise 8.5. Find the HCF by long division method. Let's do this question number 8. So 350 को हमने डिवाइड किया है 140 से. अब जो है इस 140 को हम दोबारा से डिवाइड करते हैं. अब 70 के टेबल में हम देखते हैं 2 times it's 140. So ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया. So 70 is the factor of this number. I hope this is clear. Similarly, let's do another number. Let's find out the factor of another number. Let's do this one. 288 को divide करेंगे 216. So 1 times 216. So 72. Now 216 को divide करेंगे. So here you can see 216 is divisible 3 times. So 72 is the factor of this number, highest common factor of these two numbers. Now let's move on to question number 2. Find the HCF of the following using prime factorization. Prime factorization method से हमें HCF निकालना है numbers का. Let's do this A part first. 100 and 500. So 100 का निकालते हैं. So we have found out the factors. अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन से numbers कॉमन है. 5 2 times है, यहाँ भी 5 2 times है, 2 2 times है और यहाँ भी 2 2 times है. So here the factors are 5 multiply 5 and 2 multiply 2. So the common factor is 25 multiply 4. So children, we get 100. So 100 is the highest common factor of these two numbers. Now similarly, let's find the factor of this E part. So children, here the factors of 144 are 2 multiply 3 times, 4 times. 2 को 4 times multiply करना है हमें and multiply 3 multiply 3. Similarly 132 के जो factors हैं 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. Similarly 120 के जो factors हैं 2 multiply 3 times and 5 multiply 3. So here अब आप देखोगे इन तीनों में this 2 is common, again 2 is common. अब आप देखोगे 3 3 and 3 3 common है and 5 ऊपर नहीं है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं है. So here the common factors are 2 multiply 2 multiply 3. So 2 2s are 4 and 4 3s are 12. So 12 is the highest common factor of all these numbers. So children, I hope this is clear to you. Similarly, you have to find the answer of the rest of the questions. Now let's learn about the lowest common multiples. The smallest common multiple of two or more numbers is called lowest and the least common multiple. जो सबसे छोटा multiple होता है उसे lowest या फिर least common multiple कहते हैं. For example, let's see there are two numbers given 6 and 8. So इनके अब हम ऐसे जो है multiples निकालते हैं. So when we took out the multiples, we got
24 and 48, दो मल्टीपल्स हैं. अब इसमें से सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 24. So therefore the LCM of 6 and 8 is 24. Now how can we find LCM? LCM को कैसे find out करना है? We can find the LCM by two methods, that is the prime factorization method and the second one is the division method. Let's learn LCM by prime factorization method. So here three numbers are given. हम तीनों का LCM निकाल रहे हैं. So same we have to do. We have to find out find the prime factors. So we have find out the prime factors of 8, 16, 24. Here it is written. अब जो है आप देख सकते हो कि 2 is common. Again 2 is common. 2 is common. And यहाँ पे 2 और 3 बच रहे हैं तो उन्हें भी हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, we get 48. So 48 is the lowest common multiple of these numbers. Now let's learn the LCM by division method. Find the LCM of 50 and 60 and 35 by division method. So here is the division method given. We have to arrange the numbers in the row. इन numbers को पहले हम rows में arrange करेंगे, फिर जो है इन्हें जो है particular numbers से हम divide करेंगे. So 50 divided by 2 is 25, 60 divided by 2 is 30 and 35 divided by 2 it cannot be divided, तो उसे वैसे ही हमने लिख दिया है. अब 25 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो हम सेम कॉपी करेंगे. 30 से 2 को डिवाइड किया तो 15 आया. अगेन 35 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो हम 35 कॉपी कर देंगे. अब चेक करेंगे कि ये नंबर्स किससे डिविजिबल है. 3 से देखते हैं. तो 3 से चेक किया तो 25 इज नॉट डिविजिबल. 15 को डिवाइड किया तो 5 आया और 35 is again not divisible. Let's do it by 5. So 5 say 25 को किया तो 5 is the answer. Now 1 will come and here 7 will come. Again let's divide this 5 by 5. So it will come 1. Now 7 is remaining. अब इस 7 को हमने 7 से divide किया, we get 1. So these are numbers. These are the factors. जब इन्हें हम multiply करेंगे, 2 multiply 2. Multiply 3, multiply 5, multiply 5, multiply 7, we get 2100. So this is the lowest common multiple of the given numbers. Now let's do this exercise, 8.6. Here the first question is find the LCM by prime factorization method. Prime factorization method से हमें इनका LCM निकालना है. So first question is 50 and 65. इन दोनों का हमें LCM निकालना है prime factorization से. So here children you can see the factors of 50 and 65 are 5 multiply 5 multiply 2. ये 50 के हैं. अब 65 के क्या है? 5 multiply 30. So अब इन दोनों 5 को हमने कॉमन ले लिया तो इसे लिखेंगे 1 टाइम. अब जो भी बचे उन्हें भी हम इसमें ऐड कर देंगे. 5 multiply 2 multiply 20. So let's multiply all these numbers. So 5 multiply 5 is 25 and 13 multiply 2 is 26. Let's multiply these two numbers. So children, when we multiply these two numbers we get 650 as answer. So here 650 is the prime factor of by LCM of these two numbers by prime factorization. Similarly, let's find the LCM of these three numbers: 100, 125 and 600. So children, when we find the prime factors of these numbers, तो 100 का आया, 5 multiply 5 multiply 2 multiply 2. 125 का है 5 multiply 5 multiply 5 and 600 का है 5 multiply 5 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. अब कॉमन क्या है? this 5 और भी कुछ कॉमन नहीं है तो इन दोनों 5 को मिला के अब लिख देंगे 5 multiply 5. अब जो भी बचे उन्हें हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. So 2 multiply 2 is 4 and
5 will come here. 2 multiply 2 is 4 and 3 multiply 2 is 6. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 25, 20 and 24. So when we multiply all these numbers, we get 3000 as answer. So children, I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest questions. Now let's find the LCM by division method. Division methods and LCM निकालना है. So 35, 45 and 55. This is the division method. So children, here the by LCM, by division method, we get 5 multiply 3 multiply 7 multiply 3 multiply 11. So when we multiply all these numbers, we will get the LCM of this. So when we multiply all these numbers, we get, so 3, 4, 6, 5 we are going to get. Similarly, let's find out the LCM by division method of this C part, 20, 30 and 40. So I hope children you are understanding it. So here the LCM is 5 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 2. So now let's multiply all these numbers and we are going to get the answer as, so here 120 is the LCM of these three numbers. Now let's move on to word problems. Here the first example is find the smallest number which when divided by 33 and 44 leaves a remainder 5. एक ऐसा smallest number निकालना है जिसे हम 33 और 44 से divide करें तो remainder 5 आना चाहिए. So the smallest number which when divided by 33 and 45 without leaving a remainder is the LCM of these two numbers. अब इन दोनों numbers के हमने LCM निकाले. So the LCM is 11 multiply 3 multiply 4 which is 132. So the smallest number which when divided by 33 and 44 leaves a remainder of 5. जब इस number को हम जो है is 32 plus 5 को हम इसमें add कर देंगे. So it's 137. So 137 is a number जिसे हम divide करेंगे, it will leave a remainder 5. Now let's see this example number 2. Find the greatest number that divides 145. Greatest number हमें निकालना है जो इन सब numbers को divide करा, leaving a remainder of 1, 2 and 3 respectively. 1, 2 or 3 remainder आना चाहिए. So for finding the greatest number that divides these numbers, leaving the remainder 1, 2, 3, it will be the HCF. So greatest number निकालने की बात हो रही है तो HCF निकालेंगे. So let's see. 145 में 1 रिमाइंडर आना चाहिए तो माइनस कर देंगे 1. 266 में 2 रिमाइंडर आना चाहिए तो माइनस कर देंगे 2. और 315 में 3 रिमाइंडर आना चाहिए तो माइनस कर देंगे 3. So the numbers will be 144, 264 and 312. Now we find the HCF of these numbers. जो numbers आए हैं अब इनका HCF निकालेंगे. So let's see how. Let's use this division method. Division method से हम इसका HCF निकाल रहे हैं. So when we divide 264 by 144, we get 1. Now again this 144 will be divided by 120. Now again it's this 120 is divided by 24. We get 0. Now अब ये जो 24 है, this will divide 312. So when it divided 312, we get 0. So the HCF of 144, 264 and 312 is 24. So 24 is the number that is, the number required is 24. So सबसे biggest number जो है वो है 24. So children, you have to remember that when we want a greatest number, we have to do the HCF, and when we are the question is asking about smallest number, we have to do the LCM. So let's do this exercise.
8.7. Here we have to find the number that divides these numbers without leaving a number. So बिना रिमाइंडर के होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर है तो हम इसमें हम करेंगे HCF. So let's do the HCF of all these numbers. तो 270 का HCF करते हैं. So 4 times it will go, 24 will come. Now 30 is the next number. Let's divide 60 with it. It's divisible by 30. Now let's divide this 390 by 60. So here children, the greatest number that divides these numbers without leaving a remainder is 30. Similarly, you have to do the next question here. You have to find the greatest number that divides these numbers, leaving 7 as remainder in each case. तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 को हम subtract करेंगे. So let's do this. And 95 minus 7. So here the number is 66. Now 95 minus 7 को हम subtract करेंगे. So children, here we get 22 and it's totally divided. So 22 is the number that will divide these numbers, leaving 7 as remainder. Now similarly I have to do question number 3 and 4. Now let's move on to question number 5. Find the smallest number which when divided by 14 and 12, 21 leaves no remainder. So हमें 14 और 21 का हमें LCM निकालना है. जब smallest number की बात आएगी तो हमें LCM find out करना और greatest में HCF निकालना है. So let's find out the LCM of these numbers. So let's multiply these numbers. 2 multiply 7 multiply 3. So on multiplying these numbers we get 42. So 42 is the number that should be that smallest number which when divided by 14 and 21 will leave no remainder. So similarly children, you have to find the answer of the rest of the questions that are given here. I hope it's clear to you how you have to find out the LCM and HCF. Now let's learn about the relation between LCM and HCF. For the given two numbers, LCM is multiplied by HCF. So we will get the product of the two numbers. जब हम LCM और HCF दो numbers के multiply करेंगे, हम क्या मिलेगा, दोनों numbers का product मिलेगा. या फिर LCM को यही रहने देते हैं, HCF की पोजीशन को चेंज कर देते हैं. So first number multiply second number is divided by HCF. By this relation we can find the LCM of the two numbers if we know their HCF. अगर हमें किसी नंबर का HCF पता है तो उस नंबर का LCM हम इस मेथड को लगा के निकाल सकते हैं. Let's see the example. Find the LCM of 36 and 80 by finding their HCF. LCM को हमें find out करना है इन दोनों numbers का HCF find out करने के बाद. So when we find out the HCF of 36 and 80, we get 4 as the HCF. Now let's put everything in the formula. So LCM निकालने के लिए हमने 80 multiply 36 को upon HCF कर दिया. HCF 4 था. So when we solve this, we get 720. So this 720 is the LCM of the given number. यहाँ पे हमने HCF निकाल दिया. So 4 is the HCF, and so the LCM of this given number is 720. Now let's do this exercise 8.8. Here the first question is the HCF and LCM of two numbers are this and this. तो HCF ये है और LCM ये दूसरा number है. Find one number. If one number is this, find the other. So we have to use this formula, children, that we have learned. So what was the formula? LCM is equal to number A multiplied number B upon HCF. तो LCF हमें पता है, LCM है सबको उनकी प्लेस पे. Let's put it.
Number A is given 504 multiply B और HCF हमें दिया है 126. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So 2520 multiplied by 126 is equal to B. अब ये 504 नीचे आ जाएगा. Means we have to divide with this number. So let's divide it by 3 now. Now again by 3. So children, on dividing all this, we get 630 as the number. So here 630 is the number that we get. Now let's do this fourth one. The product of two number is this. दो numbers पर जब हमने product निकाला तो answer is this. And the LCM is 240. तो 240 LCM है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 4800. Find the HCF. HCF फाइंड आउट करना है. तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में हम डालेंगे. HCF को यहाँ ले जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे नीचे ले आते हैं. सो HCF is equal to 4800 upon 240. 0 will be cancelled. Let's divide it. So here on solving this we get 20 as the answer. So here the HCF is 20. Similarly children, you have to do the rest of the question. You have to simply put in the formula and then we have to solve. I hope this is clear to you. So with this we have completed the chapter. I hope that everything is clear to you and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay.